Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and today we are going to discuss the speaking task, which is very simple and very ordinary one. And I'm just going to teach you about the things how to execute the role play in OET. So basically, you are a nurse in a community health center. This patient, 6-year-old son, has cut his finger, which is bleeding freely. Freely means that lot of blood is oozing out. So lot of blood is coming out. You examine the cut which is not too serious. तो आपको देखो, अगर आपके पास पेशेंट का फादर है और एंशियस स्टेट में आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड, हमेशा मतलब इनको याद करो इन लाइनों को। आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड, ये तो आपको डेली बोलना है, इसको तो याद ही करो। आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट द कट इज नॉट टू सीरियस, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इट इज नॉट टू डीप, इट इज नॉट डीप, सो इट इज जस्ट अ सुपरफिशियल कट। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर देयर इज नथिंग टू वरी, हेंस देयर इज नथिंग टू वरी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो कट है वो ज्यादा नहीं है। तो फाइंड आउट हाउ द कट हैपेंड। अब आपको रोल प्ले में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड आउट हाउ द कट हैपेंड। लेकिन सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन करना है। जब भी आपके पास इमरजेंसी टास्क होगा या जैसे ये टास्क है, तो आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन करना है। आप पहले ये थोड़ी पूछोगे कैसे हुआ, सबसे पहले आप पूछोगे कि सबसे पहले आप एग्जामिनेशन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एग्जामिन योर चाइल्ड, सो रीअश्योर द पेशेंट अबाउट लेंथ ऑफ टाइम फॉर द हीलिंग। तो अगर पेपर में टास्क आएगा तो आपको दिया होगा दैट लेंथ ऑफ द टाइम इज अराउंड 2 weeks. There would be no scarring, stitches are not necessary, everything would be given. Then teach the parent that how to clean, apply antiseptic and dress the cut suitably. If it comes in the exam, तो ये भी दिया होगा, it would also be given that antiseptic is basically to prevent any kind of infection. Put out need to keep the finger dry and clean. Obviously जब कट, कोई भी कट होता है तो आपको फिंगर को साफ और क्लीन रखना होता है। अगर ड्राई नहीं रखेंगे तो मॉइस्चर के कारण इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सब बातें आपको बतानी है। वॉर्न द पेरेंट अबाउट कीपिंग द, तब उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना कि नाउ कैन यू टेल मी, ये हुआ कैसे था। तो बताएगा पेरेंट, तब बताना है कि आपको शार्प इम्प्लीमेंट्स को दूर रखना चाहिए, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को दूर रखना चाहिए। बाय टैक्टफुल इन गिविंग एडवाइस, और आपको टैक्टफुल रहना है, मतलब आपको तरीके से बोलना है, उसको हर्ट नहीं करना। सो अगेन आपका टास्क जो नए स्टूडेंट्स है खासकर उनके लिए, माय नेम इज, अपना नाम बोलना है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस एंड आई एम अ नर्स ओवर हियर। बिल्कुल सिंपल, जस्ट टेक इट इजी, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड थिंग्स विल गो फाइन। सो गुड मॉर्निंग, आई एम अ नर्स ओवर हियर, सो हाउ मे आई हेल्प यू। थोड़ा अच्छा बोलना भाई, पहले सिंपल लाइन ही बोलो, हाउ मे आई हेल्प यू। तो वो बता देगा कि मेरे बच्चे को कट लगा है, तो उसको कहो ओके प्लीज डोंट वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती करते हैं। हमारे मार्क्स 450 क्यों नहीं आते? क्योंकि हम कहते हैं सीधा ओके लेट मी एग्जामिन योर चाइल्ड। मैं भी ऐसे ही कहता हूँ, लेकिन अगर पॉइंट्स को बढ़ाना है तो ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के साथ कहना है ओके प्लीज डोंट वरी। पहले उसको ये सेटिस्फेक्शन दो, प्लीज डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे हैं, वी आर हेयर फॉर योर हेल्प, सो देयर इज नथिंग टू वरी। ये वाली लाइन बोलनी है। मतलब आपको पेशेंट को, OET is all about satisfying the patient. So okay, please don't worry, we are here for your help, so there is nothing to worry, nothing to worry. So may I examine your child? That is how you execute your things. ऐसे ही आपका रोल प्ले बढ़ता है जब आप पेशेंट के साथ कोऑपरेट करते हो। अगर आप 450 को टारगेट कर रहे हो तो आपको ऐसे बोलना चाहिए हर बात को अच्छे से, ताकि कुछ भी समझने में दिक्कत ना आए। Then वो parent कहेगा okay, so after, let me examine your child. Okay, after examination I have found that cut is not too serious, which means it is not too deep, so it is just a superficial cut and therefore nothing to worry. So first of all I would dress the wound. तो उसको dress कर दो। First of all I would dress the wound so that there are no chances of infection. ऐसे ही करेंगे ना, ड्रेस करते हैं, अगर ब्लड आ रहा है तो so that there are no chances of infection. ऐसे प्रैक्टिकल बातें करो पेशेंट के साथ, आपको भी अजीब नहीं लगेगा,
और ये सब कुछ दिया होगा आपको एग्जाम में, लेकिन छोटा मोटा आप अपनी तरफ से भी बोल सकते हो, पर ज्यादा बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं बोलना। फिर आपको बताना है, फिर आप यहाँ पे जब आपने ड्रेस कर दिया है, सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ड्रेस द वुंड सो देयर आर नो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, मे आई, वो कहेगा हाँ जी कर दो, तो आप कहना ओके। अब इसमें भी यही प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जैसे ये कहा था एग्जामिनेशन के बाद मैंने पाया है, वैसे ही कहना ओके नाउ आई हैव ड्रेस द वुंड एंड वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बाकी चीजें, लेंथ ऑफ द टाइम, एंड या फिर यहाँ से कर दो एंड आई वुड लाइक टू रीअश्योर यू दैट देयर इज नथिंग टू वरी, एंड आई वुड लाइक टू रीअश्योर यू। अब देखिए आपका पूरा टास्क तैयार है और मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। और जब आप इतना लिख दोगे 3 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर में लिखने के, ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब आप बोल के देखिए, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश and I am a nurse over here. So how may I help you? Well, nurse, I am here with my son and he has cut his finger and I am really worried about him. He's just 6 years old. Please help, nurse. Okay, please don't worry. We are here for your help only. So there is nothing to worry. So may I examine your child first? Of course, nurse, you can examine. Why are you delaying? Okay. After examination, I have found that the cut is not too serious, which means it is not too deep. So it is just a superficial cut. So there is nothing to worry. But nurse, I'm really scared because the blood is coming out like anything. I'm really worried about it. As I have already told you that there is nothing to worry as the cut is not too serious. And also for the bleeding, I would like to dress the wound so that there are no chances of infection. So may I? फिर pose लो. Yes, nurse, you can. Okay. So now I have dressed. Third form लगानी है. Now यहाँ पे ed लगाना था. I have dressed the wound, and I would like to reassure you that there is nothing to worry. That your child will be absolutely fine. Also, I would like to tell you that the length of the time for the healing would take around a week, and there are no chances of scarring because it is just a superficial wound. Also, you would be glad to know that stitches are not required. So in your son's case, right now everything is fine, the cut is not too deep and the stitches are not required. I have already dressed the wound, so you can go home and can do the dressing of your child. You need not come back to the community health center even, because your child is absolutely fine. But also I would like to tell you how to do the dressing at home. First of all, you need to remove the bandage, then you need to clean the wound nicely, then apply antiseptic solution so as to prevent any infection. After that, dress the cut suitably. So that is how you will do the dressing. And it is very important for you to remember that finger should be kept cleaned and it should be kept dry, because if there would be, and if you will wet the finger, moisture will come in and the chances of infection will increase. So to prevent infection, it is very important to keep the finger clean and dry. Have you? अब यहाँ पे जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो आप आराम से पूछो have you understood. ऐसे चलता है ओईटी का रोल प्ले. अगर आपको बेस्ट करना है have you understood or should I repeat anything, ये लाइन भी उसको बोलो कि, या फिर मैं आपको कुछ रिपीट कर दूं आपको कुछ समझ नहीं आया तो, or should I repeat anything. वो कहेगा no. Okay, then also if you don't mind I would like to ask you, ये भी हम जैसे एक दूसरे को कहते हैं ना, please don't mind, I would like to ask you something. Also please don't mind, बुरा मत मानना. I would like to ask you how did it happen, कैसे हुआ. I would like to ask you how did it happen, कैसे हुआ. इसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे. जब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे इसके पॉइंट मिलेंगे. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ डिड इट हैपन. तो वो कहेगा कि मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग एंड ही वेंट इन टू द किचन. आई थिंक आई लेफ्ट सम नाइफ ओवर द टेबल and maybe he picked up the knife and that is how it happened. So आपको बताना है, please understand your son is 6 years old and at this age, इस age पे, and at this age children are curious का मतलब बड़े interested होते हैं नई नई चीजें टच करने में, are curious to touch new things. So please keep the sharp objects away. I always do, nurse, I always keep the sharp object away, but I can't take care of him all the time. See, we do understand, but your child is young, so you need to take care. Young, तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा. So you need to take care. All right, nurse, okay, I will try and take care. That's nice. And now I would like to reassure you that
अब दोबारा रीएश्योर करो, लास्ट में रीएश्योर जरूर करना है, सबसे ज्यादा पॉइंट इसी के हैं। आई वुड लाइक टू रीएश्योर यू दैट देयर इज नथिंग टू वरी, दैट इज हाउ यू विल एग्जीक्यूट। ऐसे होता है रोल प्ले। अगेन देखो, सुनना बड़ा आसान है, जब एग्जीक्यूट करोगे तो फंबल्स भी होंगे, तो आपको एक रोल प्ले को कम से कम 3 टाइम सुनना चाहिए अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो। एक रोल प्ले को जब 3 बार सुनोगे तब जाके आपकी एक्सपर्टीज बनेगी और आप वैसा बोल पाओगे जैसा हमें चाहिए। सो मैं एक बार आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Good morning, my name is Bhupesh and I am a nurse over here. So how may I help you? Well, nurse, I don't know, my son has cut his finger. I'm really worried. Okay, please don't worry. We are here for your help. So there is nothing to worry. So first of all, I would like to examine your child. Is it okay? Yes, nurse, of course you can. Why are you asking? I'm really upset. Please do that immediately. Okay. So after examination, I have found that cut is not too serious, which means it is not too deep. So it is just a superficial cut and there is nothing to worry. Is it all right? Well, yes, nurse, but the blood is coming out. Don't worry. First of all, I would like to dress the wound so that there are no chances of infection. So may I? Of course. Okay. I have dressed the wound and I would like to reassure you that there is nothing to worry. Also, I would like to tell you that within a week, your child will be fine. The cut would heal and there is nothing to worry. Also, there would not be any kind of scarring as the cut is superficial and stitches are not required at all. So you will be glad to know that the cut is very superficial and there is nothing to worry. Also, I would like to tell you that after going home, you can dress the wound yourself. First of all, you need to clean the wound, apply antiseptic solution to prevent any kind of infection, and then dress the cut suitably. Apart from this, finger should be kept clean and dry. Have you understood? Or should I repeat anything? Well, yes, nurse, I have understood everyone. Don't worry. Also, I'm giving you a leaflet which contains all the information how to do the dressing, and also you can read the information. If there is anything that is doubtful, then you can ask me. Is it all right? Okay, nurse, thank you. So here is your leaflet. Please take the leaflet. Also, I would like to ask you one more question, if you don't mind. How did it happen? Well, I don't know. He was playing in the kitchen. I was doing my work. He went into the kitchen, maybe picked up the knife and cut his finger. Okay. I'm really sorry to hear that. But also, I would like to tell you that it is very important because your child is 6. And at this age, children are curious to touch new things. So please keep the sharp instruments, sharp implements out of the reach of the children so as to prevent these kind of problems and complications. But nurse, what can I do? I can't take care of him. See, I'm not saying that you have done anything wrong. What I am saying is he's just 6-year-old, and when children are young, they need to be taken care of. So you need to take care of it. All right, nurse, I wish. Now I would like to reassure you that there is nothing to worry as the cut is not too serious. Also, you can do the dressing at home. So you need not bring him over here unless there is any complication. Otherwise, as I can see, it is superficial, so there are no chances of infection. Please keep the wound clean and dry, and keep the sharp instruments out of the reach. Is it all good? Okay, then take care. And here is your leaflet. Please read the leaflet carefully. And if there is any doubt, you can always contact us on the number given on the leaflet. All right, nurse. Okay, take care. So that is how you execute your role play. And again, I always say it's not about me, it's about you. So you need to listen to it 3-4 times to make it more efficient, much better, so that you can have control over your words. And even when I do not take the class of speaking for 2-3 days, even I fumble. अगर मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरी भी फंबलिंग स्टार्ट हो जाती है. So everybody has to practice. It's all about practice. That is the way you can do the best. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and our contact number is 76967342256. Thank you.